anybody is arrested where a bail is available from the officer, he still has to take approval of the commissioner that I am arresting this person for the following reasons. Now the most asked question कि ये 5 करोड़ क्या होता है, बड़े लोग पूछते हैं, मेरे को फोन करके भी पूछते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि सेक्शन 132 में क्या लिखना है, पढ़ते नहीं. For the purpose of this section only, the term tax shall include the amount of tax evaded or the amount of input as paid wrongly availed or utilized or refund wrongly taken under the Provisions Act, so and so. So only amount of tax, no interest for us. Right? 5 crore tax. Now how do they make it 5 crores? Supposing वो आपके पास कहते हैं कि आपने ये 4 करोड़ का आपका स्टॉक अनअकाउंटेड है, सिविल से सारा 28% का था, अप्रूव करो 12% का था, बाद में करना, 5 करोड़ बना देंगे आपका फटाफट, if they have to arrest you, right? So this is section 132 read with section 69, and the interplay of Roman 1, Roman 2 upon section 132 subsection 1 with section 69 read with section subsection 5 and subsection 4 of section 132. तो अगर 5 करोड़ का आपका टैक्स एवेजन है for reason mentioned in subsection subclause A, B, C, D, then commissioner under section 69, if he has a reason to believe you have committed any of these offences, he can authorize any officer to arrest you. And since this offence is non-bailable, you have to go to court get bail, and you have to produce before the magistrate within 24 hours after you have been informed of the reasons or grounds of your arrest. And for other offences which are punishable in Roman 2, subsection 4 says these are bailable, and the officer who arrests you has the power of police officer to grant you bail, subject to such conditions as he may prescribe. And both these arrests cannot be made unless there is approval of the commissioner. चाहे वो नॉन बेलेबल है या बेलेबल है, कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए. एंड commissioner is one. Commissioner is one. Go back to section 2. Let's see whether commissioner is defined. You have raised a good question. Subsection 24. Commissioner means the commissioner of central tax and includes the principal commissioner of central tax appointed subsection 3. So there is no joint commissioner, special commissioner, additional commissioner. Commissioner for the purposes of central tax. The principal commissioner also enjoys the power of commissioner. Only principal commissioner, not additional commissioner. Right? Sir, can we have a commissioner and principal commissioner both in a Central में. Statement. So are we clear on any question 132, 69? Okay. The 132 opening line कहती है कि whoever commit or forced to commit and retain the benefit. Retain the benefit किसके लिए? खाली forced to commit या tax का? दोनों के लिए है. दोनों के लिए. Whoever commits or causes to commit and retain, and is after both, or and will combine both. अगर बेनिफिट नहीं फिर क्या किया उसने? चोरी को कर रहा था, पैसे चोरी कर रहा था और क्यों कर रहा था? Benefit, right? Come back to section 67 now. This subject to rules mentioned in the Act, you can go through it yourself, they are only procedural part. It starts with where the proper officer, who is proper officer? As defined in section 2, subsection 91. Only that proper officer who has been authorized or appointed for any purpose of this Act, that is section 291. Not below the rank of joint commissioner. तो ज्वाइंट कमिश्नर से नीचे कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं हो सकता for the purpose of invoking powers under section 67 has reason to believe that a taxable person is not registered person, a taxable, that is who is required to be registered or with registered,
has suppressed any transaction relating to any supply of goods or services both, or the stock of goods in hand. That is, physical versus book stock varies. This is one of the reasons for creating a impression or reason to believe that this fellow is doing some hanky-panky. Or has claimed input as credit in excess of his entitlement under this act. Entitlement is not availment or utilization. That is section 16. That is, you cannot take input as credit under section 16, you are not entitled if it is barred under section 17. That is the interpretation of this particular word. He has taken excess input as credit, then his entitlement. कार पे नहीं लिया, उसने ले लिया. उनके पास सारे रिकॉर्ड है ना, आपने कहाँ कहाँ बाइटी से लिया है. आपको उनके रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है. So they are not talking of availment or utilization. You have taken, you are not entitled, you have taken more than that. Or has indulged in any contravention of any of the provisions of this act. This is a बेलगाम का घोड़ा, कोई एक्ट का प्रोविजन रूल किया उसको पकड़ लो. To evade the tax under this act. कि जीएसटी लॉ में उसने पे सारे काम किए चोरी करने के लिए. Any person engaged in business of transporting goods, or an owner or operator of a warehouse or a godown or any other place is keeping goods which have escaped payment of tax, or has kept his accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable in this act. जितने ये cold storage हैं आपके हरियाणा के border में, ये सारे काम यही करते हैं, चोरी करके काम करते हैं. Supposing they are raided, कि भी आपके पास जो 200 किलो बादाम पड़ा है, किसका पड़ा है? वो कहता है जी के.एन. भट्ट साहब का, नोएडा में रहते हैं. आप मिले उनको? हाँ जी, उनका ट्रक आया था, उनका नाम आया तो रख लिया, हमने रख लिया, उधर तो किराया लेते हैं. They contact के.एन. भट्ट. He says, I don't know, I'm a lawyer, मेरे को बादाम तो नहीं बेचता. So this means what? You are keeping goods which have escaped payment of tax. He is liable because he is a godown owner, operator, he is liable. So ये जो इसका subclause B है, this is more dangerous than subclause A. ये जितने आपके शिपिंग गोडाउन्स हैं जहाँ लोग ICCL करते हैं वगैरह वगैरह करते हैं, ये सारे बहुत रेड हुए हैं बॉम्बे में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं वहाँ पर. Any person in business of transporting goods, transporter. अब उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले वो चोरी करते हैं, इनके रेड करो. तो उनके 50,000 स्क्वायर फुट के गोडाउन में रेड कर दिए. आज किस किस का माल पड़ा. दुकान से क्या बात कर रहे हो जी, हमारा धंधा रुक जाएगा. नथिंग डूइंग, बताओ. So they are supposed to give you information. If they don't, this is suppression of fact. The definition of suppression of fact is explanation 274 is for the purposes of this act. So we will apply that definition here कि जो आप facts दे रहे हो वो गलत है. गलत है तो you are deemed to be a supplier. You are keeping goods to evade payment of tax which are not part of your books and accounts. So therefore, the proper officer can search you, inspection you. He may authorize in writing any officer of central tax to inspect any places of business or tax a person or the person engaged business transporting so and so, so and so. So Joint Commissioner ने अफसरों को INS Form 1 इशू करना है कि इन पे सर्च करो. उसके लिए he has a reason to believe that he has to record somewhere, not to be given to the taxable person. He has to record reason that क्यों रेड कर रहा है, whether it's surplus A or surplus B. Once he records the reason, he is satisfied that these kind of things are happening, what is mentioned in surplus A and surplus B, then he can authorize any person. Who can authorize? Person not belong to the rank of Joint Commissioner. He is the proper officer. You go and search his premises. So whenever a party comes to you, you can always see INS 01. If it's simply Ghuggi Maro, there is no designation, you can tell them, get out. Not authorized. You can tell them legally, you don't enter, you are not authorized. Get a search warrant. They can leave the team here. हमारे फैक्ट्री बात छोड़ देंगे, लेके आएंगे वारंट, नया लेके आएंगे उसी डेट में, राइट? सर मेरे केस में इसमें उसने दिन नंबर हमें फर्निश कर दिया. जितने केस पूछिए उतनी बार इसको होस्ट बना दो. आप क्यों डरा रहे हो उसके ऊपर? मेरे बड़े पैसे. ये तो क्या हुआ? ये 2-3 हज़ार रुपये के लिए नहीं मरने वाली.
ऐसे ऐसे बंदूक नहीं बुलाते हैं 2,000 रुपए के जो मर जाए उसी टैक्स लगाई जाओ दवा में जंद कर दूंगा लेडी सारी इस आदमी को ज्यादा ही नहीं है I will make him a cession default. वो उसमें भी Then you see he will not account anybody. फिर सब लोग टैक्स में काटेगा हाँ जी sorry. सर जैसे मेरा इंटरस्टेट था, मेरा ब्रांच ऑफिस था उड़ीसा में फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने कहा कि हम आपको कॉपी नहीं देंगे, वहाँ पर सारा स्टाफ था लोअर लेवल का, उन्हें नहीं पढ़ना था, उन्होंने कहा हम आपको फर्स्ट वारंट की कॉपी नहीं दे सकते, पिन नंबर उन्होंने दे दिया। अब पिन नंबर में जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है फर्स्ट वारंट, वहाँ किसका वो फर्स्ट वारंट है वो लिखा हुआ नहीं है, तो इस केस में कैसे No, you can always you can tell them to show a copy of such file. They cannot enter it. that's not a proper search warrant. That conflict you have to raise. Law gives you a right. If you don't enforce, that's your problem. See, tomorrow on this ground the search can be declared illegal. But what happens to the evidence they have collected? That can be used. Search can be declared illegal. If any attachment has taken place, that can be annulled. But where they got evidence in possession, that can be used against you. after giving notice. Any material sought is even in an illegal. Sir, Where the proper that can officer, be- not the joint commissioner, either pursuant to an inspection carried sufficient amount or otherwise, had reason to believe that any goods liable to confiscation or any documents of books or things which in the obedience shall be useful for element proceeding and act are secreted in any place, he may authorize in writing any other person to search and seize or themselves as this also. अगर उसको चाहता है कि मेरी कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई एविडेंस है जो किसी ने छुपा के रखी हुई है, दीवार के अंदर एक दरवाजा है, उसको खोलना पड़ेगा तब माल मिलेगा अंदर। पिक्चर में देखते हो ना, दैट इज सिक्रेटेड। The word secreted is defined by Supreme Court, which is not easily accessible. That's the meaning of secreted. So they have a power कि इनको जैसे भी खाना है चाहे एविडेंस इकट्ठी करो और ले जाओ। अलमारी आप चाबी नहीं देते हो तोड़ देंगे, आपके घर नहीं खोलते घर का ताला तोड़ देंगे, right? But all this can such party can do if when they are authorized by the joint commissioner, by an officer not below the rank of joint commissioner. Joint commissioner से ऊपर का आदमी कभी भी अथराइज कर सकता है। Joint commissioner doesn't mean कि joint commissioner का जज वारंट हो, उससे ऊपर भी एडिशनल कमिश्नर कर सकता है, प्रिंसिपल कमिश्नर कर सकता है, कर सकते हैं। But the officer who is signing this INS1 and authorizing these kind of actions cannot be an officer below the rank of joint commissioner. Provided that there is not practical to seize any good, the proper officer will say, one of them shall not start with, they will say, detention order. तो भाई ये अलमारी हमारे से नहीं खोल रही, ये तेरा कंप्यूटर हमारे से नहीं खोल रहा, तेरे पासवर्ड लगा रखे ये है, pass an order that these goods are detained, left with you. You cannot part with these goods. They can seal it properly and leave the goods there. ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा होता है. They can't carry all the almaras now. रखेंगे कहाँ उनको? वो सील करके they put it detention order, you cannot use it. Right? Next. ये प्रोसीजर है, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है. The documents, subsection 3 is important. The documents, books or things referred to in subsection 2 or any other documents, books or things produced by taxing person and which have not been relied upon for the issue of notice under this act or the rules made thereunder shall be returned to such person within a period not exceeding 30 days of the issue of this act notice. अब वो नोटिस इशू करने में 6 महीने लगाता है, तो 6 महीने तक all these books of account he can keep. पर नोटिस होने के बाद 30 दिन के अंदर उसको 100 मोटो आपका सारा कुछ वापस कर दो. They never do it. If they don't do it, move an application. If this notice has been issued, please return our books of accounts. They will. They do. They don't keep it. लेकिन वो रूटीन में उनको पता ही नहीं होता कौन सी किताबें कब आई थी, क्या वो बताएंगे हमारे. 4. The officer authorized under subsection 2 shall have the power to seal, break open. So who is the officer? Not below the rank of joint commissioner. They are referring subsection 2. To seal or break open the door of any premises or break open any almirah, electronic devices, box, or which any goods, accounts, registered documents of person are suspected to be concealed or where access to such premises, almirah, electronic devices, or when is denied. Suspected to be concealed. He has a suspicion, no proof. In law, a suspicion can never be take place of proof. But here power is given when he is suspecting कि तुमने कुछ छुपा रखा है तो बता नहीं रहा.
तो कहता मेरी गाड़ी की चाबी गुम गई है, ये ब्रेक ऑफ द लॉ। तो दिस अगर ये पावर नहीं हो तो दे कैन नॉट ब्रेक ऑफ। टेल यू आर गोइंग टू टेक समबडीज प्रॉपर्टी, कैश हो सकता है, कुछ भी और भी हो सकता है उसमें, therefore the act has given power, you can break off, अलमारियां तोड़ जाते हैं, right? The person whose custody and documents are seized under subsection 2 shall be entitled to make copies. ये भी copies कभी देते नहीं है, you have to make copies, copy ले सकते हो, उसको power है। Subsection 6 is very important, which should be read carefully. The goods, it applies only to goods, not to document or books of accounts. Document books of accounts are part of section 3, subsection 3 and 4. Subsection 6 doesn't deal to any books of accounts. Under subsection 2 shall be released on a provisional basis upon execution of a bond and furnishing of a security in such manner and of such quantum respectively as may be prescribed, or on payment of applicable tax, interest and penalty payable as the case may be. This phrase was defined by Supreme Court under GST law in the case called Pan Fragrances versus State of UP. The fact of the case was कि यूपी में ऐसी बहुत सारी रेड हुई, लोगों ने सीज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबका वापस कर दिया, ये गलत है, रिलीज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब वो डिपार्टमेंट कहते हैं कि हम तो कुछ भी करेंगे, सारी रेट खत्म हो जाता है 1 मिनट के अंदर, क्योंकि पैसे बता रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। तो स्टेट ऑफ यूपी फाइल्ड एन अपील इन सुप्रीम कोर्ट, SLP was accepted and heard on merits. What is SLP? SLP is special leave to contest, special leave petition. That is, if an order is passed by a lower court, lower than Supreme Court, you have to file first SLP. The judges will see whether you have a legal issue to be decided by us, or is it not a settled matter. So first special leave petition is admitted, and then heard on merits. Admission itself doesn't mean any order has been passed. Only when this is heard on merits and an order is passed, then we say Supreme Court declares the law under Article 141. SLP stay हो गया, कुछ हो गया, उसका कोई मतलब नहीं, right? When they filed SLP, Supreme Court will hear it. After hearing both the parties, they passed a historical order which has never ever been done in India by any Supreme Court. They said the subsection 6 deals with the release of goods on a provisional basis. And when will this goods be released? The grounds are mentioned. Security ले, ये ले, payment of tax, interest, penalty, applicable tax, जो भी ले. The courts have no discretion in the matter. But this is a power given to whom? Let's read again. Provisional basis, not below the rank of Joint Commissioner. वो कहते हैं कि पावर उसकी है, वहाँ पर हाईकोर्ट entertaining in Article 2 to 6. They passed a very dangerous order where Allahabad High Court was virtually abused by Supreme Court. So what have you done? Not strict terms, it's a very dangerous order. They say all those writ petitions which you have decided after GST Act on this issue are directed to be dismissed. सब रिलीफ खत्म कर दिया, and they pass further order कि if any writ petitions are pending before you which have not been heard, they are disposed of by this Supreme Court order. And they pass the judgment कि subsection 6 is the statutory power of the proper officer. He has to release goods, this is his baby. He wants the security, he wants a payment of tax, interest and penalty, applicable tax. So Pan Fragrance, this case came, and where after that the high courts, they are still entertaining, but where there is a question of jurisdiction, a question of vindictiveness, they are entertaining, otherwise no. You have to go to the Joint Commissioner to release our goods on provisional basis. तो अगर आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा कराते हो तो उसको रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको टैक्स ही चाहिए, वो ले लिया, राइट? सर प्रोविजनल बेसिस पर जो गुड्स रिलीज हुए हैं उनको फर्दर yes, you can sell. They are safe, no? But this is not a final order. You must just, he still has to pass under 73, 74. उसको डिमांड तो निकालनी है ना? अगर वो डिमांड में आप जीतते हैं, then remember 54 मैंने किया था 5410. Pursuant to any court order, refund will be given to you. Refund will be given to you if you apply within a particular time, and they must give within 60 days or जो भी time है.
उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ लॉज. 7. Where any goods are seized under subsection 2 and no notice effect of thereof is given within 6 months of seizure of goods, the goods shall be returned to the person from whose possession they were seized of, provided that the period of 6 months on sufficient cause being shown be extended by proper for a further not exceeding 6 months. Again this applies to goods. कि अगर सबसेक्शन 2 में जहां आपने कोई गुड सीज किए हैं और आपने कोई नोटिस 6 महीने के अंदर नहीं दिया तो यू हैव टू रिलीज द गुड्स. अगर 6 महीने के बाद आपको और टाइम चाहिए तो देन दिस कैन बी एक्सटेंडेड बाय प्रॉपर ऑफिसर. प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर. एंड आफ्टर दिस यू हैव टू रिलीज गुड्स. देन फर्दर पीरियड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. दिस इज लैंग्वेज प्रोवाइडेड द पीरियड 6 months be extended by the proposal for a further period not exceeding 6 months. That is only one extension is possible, not 2 extensions. पर ये जो एक्सटेंशन है इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं. कौन? मतलब हम फॉर एग्जांपल मेरे गुड सीज हुए हैं और 6 मंथ बाद में वो रिलीज नहीं करते हैं. तो साल भर के बाद अगर होगा कोई तब आपको जाके पावर नहीं है ना. साल भर की जगह आफ्टर 1 year यू कैन हिट डिस्क्रिप्शन यू कांट क्वेश्चन कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं. कह रहे पावर है बस आप इसको ऑर्डर को चालू कर दो. कोर्ट में जाओ. कोर्ट में जा सकते हो. सबसेक्शन 9. वो बोलेगा जी कोविड था, मैं तो बीमार था, मैंने कुछ किया ही नहीं इसमें, या मेरे पास बहुत सारा काम था मैं नहीं कर सका. कमिश्नर को करना है ना, वो कमिश्नर हमारा थोड़ी करेगा. मतलब यू कैन नॉट क्वेश्चन सफिशिएंटली ऑफिसर. कोर्ट में क्या कहोगे? नो सर हिज क्वेश्चन इज लॉ आफ्टर डज दैट फाइल. नॉट रिक्वायर देम टू शो यू सफिशिएंट रीजन फॉर एक्शन. Sir, can he extend the period after the expiry of 6 months? His question is this. Yes, one extension is there. Extension is always before the expiry of petition. That's a general law. But a post facto approval in terms of procedure can be had. आइटम ऐसी है तो जल्दी खराब हो जाती है. वो आगे वो मैंने पढ़ा नहीं. अगले वाले उसके लिए प्रोसीजर है. मैंने पढ़ा ही नहीं, उसको बता रहे हो. उसको प्रोसीजर है उसके लिए. उसके हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं. आई एम ओनली रीडिंग वेयर देयर इज द लॉ इन्वॉल्वड. Subsection 9. Where any goods are seized, he shall prepare an inventory of such goods in a manner as prescribed. अब इन्वेंट्री बनाते हुए आपको ध्यान रखना है वो क्या लिख रहा है. बाद में कहते हैं कि हमारे तो 4 डब्बे थे, मैं 10 लिखे जानबूझ के. नॉर्मल आर्गुमेंट इसको साथ में लेके जाते हैं. आपको समझ में आता है. साथ में जाता ही है. Rustic mugger, supposing I take you to the paint godown. तो पेंट 1 साल लगे रहे, they cannot count inventory. कभी वो साथ में आपके जाते हैं कितने से डिब्बे अकाउंट करा. कर ही नहीं सकते. एक कलर के पेंट के 400 एसक्यूज हैं. ये 4 रात लग रहे. जावेरी को काउंट करना, कहते काउंट की कितनी रिंग्स हैं वहां. तो वहां एडॉक बेसिस पे लिखते हैं ये लोग. बट इफ यू हैव अ रीजन यू शुड ऑब्जेक्ट. कि नहीं सर इन्हें आप पूरा गिनिए. पहले तो आपसे वो स्टॉक लेकर मांगेंगे. आप बोलोगे जी ये सैप से निकला है, 413 पेज का स्टॉक है हमारे पास. So what do you think? The mugger are going to count? बोलेंगे 100 ग्राम के पेंट के 400 डब्बे, 500 ग्राम के 600 डब्बे. ये हमारी कंट्री में थोड़ा है, बाहर नहीं करते ऐसे. बाहर के फोरेंसिक कंट्री में ऐसे नहीं होता. अमेरिका में ऐसा नहीं होता. दे डू मैक्रो कितना वैल्यू स्टॉक है उनके पास. वो टेक्निक्स है, हमारे टेक्निक्स है नहीं. हमारे सीएस को ये नहीं पता फोरेंसिक कंट्री क्या होता है. जीएसटी में none of you know, I tell you. And I know because I do work on this issue with somebody in America. इनकम टैक्स में ही फोरेंसिक आइटम आपके सामने नहीं होते. और जो मैंने भी जो फ्रॉड वाला बताया, जीएस सागर वाला, वो भी किसी को नहीं पता. ये सब ये 4 लाख बिग लाख फर्म है, पता इनको भी नहीं है. और सिर्फ दे हैव द टेक्नोलॉजी, द सॉफ्टवेयर, दे कैन डू इट. फॉर एग्जांपल इन अमेरिका, इफ आई एम ए जीएसटी ऑफिसर, आई विल डू योर ऑडिट इन 2 days. कितनी बड़ी फर्म है. आई नो व्हाट आइटम यू आर सेलिंग. I take a message over to PDF, I'll feed them in a software. Within 1 hour report will come कि कौन सी इनवॉइस कॉन्ट्रावेंट कर होगा. उनका सारा एसएसएन कोड उनके कंप्यूटर में है. आप जो आइटम बेच के हमने क्या कोड लगाया है, उस पर क्या कोड लगना था, they have that software. You know, Mr. my joint commissioner Rajneesh Chaudhary, right? He runs a law firm with some Gora there. So I work for them. So I know how we gave it. हमने इनको दिखाया था.
राजेश प्रसाद को महाराष्ट्र में, गुजरात में, सबको दिखाने गए थे हमको। बट इट्स सो एक्सपेंसिव, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, उसके बिना हम कर ही नहीं सकते। इट विल कॉस्ट हम $2.3 million पर सॉफ्टवेयर। अगर जो उनके पास हो तो ऑडिट कितने आसान हो जाए। ये जो ईवी इन्वेस्टिंग आपकी चल रही है ना, ये हो सकता है 5 करोड़ में आ जाए वेरी सून। नहीं बस छोड़ो, बट ये बहुत फेक न्यूज़ है ईटी वाला। बट देयर इज अ प्रपोजल विद द फाइनेंस मिनिस्टर, बट शी सेज आवर सॉफ्टवेयर कैन नॉट हैंडल, जस्ट अपग्रेड द सॉफ्टवेयर। अब जब सारे आपके इनवॉइसेस वहां आ गए, आपके ईवे बिल आ गए, अब वो डाटा कोलेक्ट करके उसको एनालाइज तो करना है, उनको आपको बुलाने की जरूरत क्या है। 3 भी उनके पास है, 280 भी जो भी FIO GSL जो फाइलिंग के पास है। आप उसको लिंक से क्रिएट करके आपको उनको इंफॉर्मेशन लानी है आपने क्या किया, देन कम्स द ऑडिट। अब 180 दिन का पेमेंट ये नहीं ला सकते कंप्यूटर में, इनके पास इंफॉर्मेशन बेकार का प्रोविजन है। गुड्स आप में सिलिकन से रिसीव्ड ये भी नहीं कर सकते, लेकिन बाहर ऐसे घटिया किस्म का लॉ भी नहीं है। There is no machinery to prove कि how did you prove कि goods are physically received। जो अटके लगाते हैं वो चोर था, ये चोर था, ये सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना, लेकिन बाहर से नहीं। वहां तो एक प्रोसीजर ले डाउन है, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ तो कोई मशीनरी नहीं है कि 62 की कंडीशन आप कैसे सेटिस्फाई करोगे। हम कहते हैं एक्सेस पेमेंट, ये हमने वो सेटअप ए से बी से सेटअप कर दिया, इज इट अलाउड, हैज इट बीन डिफाइंड समवेयर। ये भी करते हैं, हम भी करते हैं। मेरे केस में अभी किसी ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया $10 million, जिस फर्म को किया दैट वाज अ डिस्ट्रिक्ट पर्सन, वो फॉरगेट कंडीशन की आपको छोड़ दो। उससे उसने इंपोर्ट भी किया, इंपोर्ट $9 करोड़ की, एक्सपोर्ट 10 करोड़ की, उसने 1 करोड़ पेमेंट कर दी, मेरा तो पेमेंट आ गई, वो रिजेक्ट हो गया, हमारे पास आया हाई कोर्ट के लिए। लेकिन ये क्या किया, कहता जी वो फैमा में डाला उड़े। मैं कह फैमा का डील कर रहे हैं अब किसी ने उसको एडवाइस किया, एंड वी शोड हिम जजमेंट इट्स नॉट अलाउड। फुल पेमेंट इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज ओवर इन INR एज मैं कहा आरबीआई ने आपको परमिट किया इसके ऊपर। फैमा के लिए प्रोविजन है कि बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन टू डू दिस सेट ऑफ्स, हमारे यहाँ तो नहीं। अरे अब जब फॉरेंसिक ऑडिट में आप कवर हो जाओगे तो कैसे करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल इन कस्टम्स एक्ट देयर इज एक्सेप्शन कोड 8501 कि इफ यू इंपोर्ट एनी गुड्स फॉर द फुल प्रोजेक्ट कस्टम ड्यूटी 5%, नॉट विथस्टैंडिंग व्हाट द एक्चुअल ड्यूटीज। बहुत बड़ी कंसेशन है। अब लोग क्या करते हैं, जो चीजें वो नंबर 2 की यहाँ से लेते हैं वो तो यहाँ से ले लेते हैं, और 40% बाहर से लेकर 5% क्लेम करते हैं। It's going to Supreme Court, but they're not allowed. डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में कैसा है सर, मैं एक पार्टी को सेल भी कर रही हूँ, परचेज भी कर रही हूँ, तो नेट ऑफ पेमेंट कर दूँ या उस पर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। 180 में यही करते हैं ना आप। मैं मेरा क्वेश्चन है कहाँ लिखा है, एक हमारी इंटरप्रिटेशन है, बोले लॉ में इनको लिखना चाहिए, सो दैट देयर इज नो एम्बिग्विटी। अब जैसे उसका सेक्शन 12 का अप्लाई कर दिया, 9 लाख की डिमांड निकाल दी उसके ऊपर। अब किसी ने पढ़ा ना उसको, चाहे वो झारखंड में था, बस somebody read it and sent them a notice। ये 180 दिन का कहाँ लिखा है? उसमें सर ये लिखा कि 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी। अच्छा पेमेंट बॉडी नोटिफाइड एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कंसिडरेशन के लिए लिखा है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको फॉरेन उसमें एक्सचेंज में आनी चाहिए, तो शायद उस वजह से इम्प्लीकेशंस उसकी ज्यादा नहीं मैं इसकी बात नहीं, ये कुछ और बात कर रही है। इन इंडियन लॉ if you read section 25D contract act, in Indian law consideration can move from a third party also। so 180 दिन पेमेंट अब कोई थर्ड पार्टी पे आपको कर सकते हैं, इंग्लिश में अलाउड नहीं था। लेकिन जो हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 की कंसिडरेशन की डेफिनेशन है दैट्स टोटली डिफरेंट। हमारी प्रॉब्लम है कि जो हमारी यहाँ डेफिनेशंस हैं दे डोंट सपोर्ट दे डोंट सपोर्ट बेस्ड ऑन कोलेटरल लॉस, वहाँ प्रॉब्लम है। so you not only have to read definition or apply the definition right here। तो हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ये बात है, मतलब एक्सपोर्ट करती है पेमेंट है, श्रीलंका है, श्रीलंका में करेंसी से, अब एक बंदे ने दुबई से अपनी उसके थ्रू पेमेंट मंगा ली, तो ये करने से भाई
he has to bring evidence on record कि ये हवाला पेमेंट नहीं है, इसे लाओ, कहीं लिखा कि उसी बंदे को देनी है. But if you ask me strictly, आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? जिसने इंपोर्ट किया श्रीलंका वाले को, ठीक है, then he must exchange letters with you कि I cannot give this payment, I am authorizing my supplier to make payment for on my behalf. एविडेंस रिकॉर्ड पे लाओ, नहीं है तो फिर वो तो फेमा वाले पकड़ लेंगे. फॉरेन पेमेंट में वही प्रॉब्लम है ना, हमी ट्रांजेक्शन आपकी ईडी आ जाएगा आपके पीछे. ओके, subsection 12, the commissioner or an officer authorized by him may cause purchase, ये बोगस परचेज करके आपको पकड़ सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, इनको पावर है. कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम, ये पावर आजकल यूज हो रही है कि आप अंडर बिलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर बिलिंग कर रहे हैं. देन वी कम टू सेक्शन 68. So 67, you have to read 1, 2, 3, 4, 5, 6, more than enough for the purpose of litigation. बाकी सारा procedure है, इसमें कोई problem नहीं है. The government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods, again this applicable to goods of value exceeding such amount as may be 50,000 रुपये. ईवी बिल के ये 50,000 दिल्ली में 1 लाख, दिल्ली में इंट्रा 1 लाख, इंटर स्टेट 50,000, मतलब इंट्रा स्टेट 1 लाख, इंटर स्टेट 50,000. तो ये तो कंट्री है तुम्हारा. मतलब एक टीवी लाना तो आपको पहले ईवी बिल निकालो, अपनी गाड़ी में लगा के लिया कोई बात नहीं, नहीं वहाँ भी पता है मेरे को, पर ले कौन पूछता है, लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ मैं दिस इज द कंट्री यू लिव इन. रेडी पे ले आओ, कोई नहीं. हाँ, in charge of a conveyance, go to section 2. Let us talk of you ready business also today. I keep hearing this. Conveyance is defined. Section 2, subsection 34. Conveyance, what is defined? Conveyance includes vessel, an aircraft and a vehicle. So what is vehicle? मोटर व्हीकल है. कहाँ लिखा है vehicle? कौन सी definition? वो motor vehicle है. because vehicle is defined under motor vehicle Is cycle not a vehicle? Cab definition, have they adopted motor vehicle definition? कहीं पर तो है, कहीं पर वो motor vehicle है, मुझे पता है. कहीं पर है motor vehicle definition है, वो तो हमने काम कर चुके हैं यहाँ पर. That's why I'm raising a question. Minds get caught कि ये इसका क्या मतलब? Motor vehicle 76 shall have the same meaning as assigned to class so and so Motor Vehicle Act. So motor vehicle definition adopt कर रखी है इन्होंने. What is the meaning of vehicle? Which moves on wheels? Can you say कि rickshaw is not a vehicle? व्हीकल में साइकिल रिक्शा में But लोगों को तो ये रिक्शा उसमें we are reading law. वो क्या हमें नहीं. नहीं बिल्कुल यू आर राइट. Is vehicle defined? Rasik, what's your opinion? अब आप अगर ईवे बिल के लिए करते हैं तो वहाँ पर फिर वो आई थिंक रूल 138 में उसमें मोटर vehicle व्हीकल लिखा है. ये बिल कर लिए मोटर व्हीकल. Only for the e-way bill the word is motor vehicle. हाँ. A ready can be inspected, searched. रिक्शा can be inspected. अभी इतना इजी हो तो सारे वो खाली बावली के 2-2 करोड़ के काजू रिक्शे में भेजेंगे. So motor vehicle word is used only for rule 38 sub rule 1. That be rule 38 sub rule 10. Motor vehicle only for e-way bills. बाकी section 68 के लिए नहीं है वो. रिक्शा कैन बी Why not? Why not? Why not? कल को तो सीए की वो पकड़ आ रहे सारी साइड में किताबें रखते हैं पर फिर से किताबें सारी वापस रिक्शे में उसका मतलब ले आ जा भाई. What I'm trying to say is when we're reading law, you have to see what word is used. If the vehicle was defined to be only motor vehicle, then we were right. But since motor vehicle has been separately defined and e-way bill uses the word motor vehicle, here the word is only vehicle.
carrying on any consignment good value exceeding so and so, the detailed document reference current substance shall be validated in such manner where any conveyance referred to subsection 1 is intercepted. So conveyance includes what? Vehicle. By proper officer at any place, he may require the person in charge of said conveyance to produce the documents prescribed under the said section and devices for verification, and the said person shall be liable to produce the document for inspection of goods, and if you don't do it, they'll invoke section 139 or 130. Legal penalties. This is section 68, 67, 68. And this is also a ground for section 83. This chapter is also ground for attachment to your property. We have done all those 6 chapters. Last 70. सबसे डरावने वाला जो संबंध आते हैं सेक्शन 70 में आते हैं. Let's read this carefully. All of us have read it, but let's read from another angle today. The proper officer under this act shall have power to summon any person. So who is the proper officer? Go back to 291. Read again. We read many times. Let's read it again. 2 subsection 91. Proper officer in relation to any function to be performed under this act means the commissioner or any officer of the central tax who is assigned that function by the commissioner in the board. हमारे DGST में commissioner है, board नहीं हमारे में, right? So commissioner ने अगर सारे GST को proper officer बना दिया, सबका भाव है, right? Now what is the word used here? Let's go back to 291 again. The word is in relation to any function means the commissioner or an officer who is assigned that function by the commissioner in that board. So till he is a proper officer जिसको ये power assign कर दिया commissioner ने, by designation he doesn't become a proper officer. Notification सर्कुलर जो भी रूल्स में कहते हैं वो होना चाहिए. अगर नहीं है तो he cannot take any action against you. अगर ये सेक्शन 70 को इन्वोक करना है, power to summons person to give evidence and produce documents. Evidence includes statements. Statement is also a part of evidence. Confession is also part of evidence. Statement recorded against you by other person is also an evidence. So evidence is a huge word which is not defined in the act. The proper officer under this act shall have power to summon any person. The word is the proper officer. That is, if summon was issued by joint commissioner, assistant commissioner cannot carry on the proceedings. The word used is the before proper officer. Any officer lower than joint commissioner cannot do section 70 proceedings. But his successor can if it is the same designation. Successor includes the earlier officer also. Shall have power to summon any person, the person are defined in the act, whose attendance he considers necessary. तभी सबने में लिखा होता है कि your attendance is required in connection with this. Either to give evidence or to produce a document or any other thing. They call a seller to record his statement. That is any other thing. कि भी आपने इनको माल बेचा था, ये कौन है आपका बंदा, ये वो करके. In any inquiry, in the same manner as provided in civil court under so and so. When we say proper officer under this act followed by any inquiry, that is any inquiry he proposes to make under this act. He can make any inquiry, anything. Out of this entire sections, he can do anything. He can make inquiry, call anybody कि तेरी अटेंडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट ला, एविडेंस ला, रिटर्न्स ला, जो ला, और तेरी स्टेटमेंट चाहिए तो हमारे पास आ जाए. Read subsection 2. Every such inquiry referred in subsection 1, मैंने कल बताया था आपको, shall be deemed to be a judicial proceedings within meaning of 193, that is 7 years imprisonment if you tell a lie, or you produce a fabricated documents, or you give a wrong CA certificate, or a lawyer give a forged opinions. These are judicial proceedings. Nothing
no lie can be told, and no fabricated document. That's why section 193, 228 both are used for CRPC. If you do, if they catch you, they can threaten you with 7 years imprisonment. जाओ बेल लो. So now there are two offences. एक तो आपका जो offence चल रहा था वो है, आप एक और offence बना दिया, आपने झूठी information दी, यहाँ फोर्जरी की. ये जो CS का केस बना गुड़गांव वाला, that is the case exactly they are made out. All their documents were forged. They approved it. They simply signed as true copies that no document which never existed to claim refund for 15 crores. Well, तो कहीं चाइनीज कहीं आए कुछ 6-7 बंदे पकड़े उसको. वो तो बॉम्बे में हुआ है. वो तो बॉम्बे में हुआ है. So tomorrow I think we'll take off. Saturday. बोलो ठीक है, करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं. No, tomorrow we'll take off. Then we'll take a 1 week off. Then I'll take the room again. Then last session we'll have whenever we have full 7 days to complete this 50 hours. You have to give photographs. जैसे कि आपको देनी है जल्दी.